Let's begin with our top story, and that's the murder of Tripura student Anjel Chakma in Uttarakhand's capital, Dehradun. That's triggered a massive outrage. Now, the police has come out and said that this was not a case of racial attack. So there is a twist in the case, is what the police is claiming. Remember, this case had triggered a massive outrage nationwide after it emerged that the Tripura young person from Tripura, this youth from Tripura, was killed because of, it had racial connotations by a group. Now, it's the father of Chakma who has appealed to the government, seeking action, saying that he wants no one else to experience what he has. ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो दो ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली, उसके ब्रदर डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज उसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहाँ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ, और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं, उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो सभी जेल में हैं। जो मुख्य वांछित अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। थोड़ा देर में हमारे ख्याल से ट्वीट भी कर लेंगे हम। देखो, पहले तो हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग एक समाज को पूरा बदनाम नहीं कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है वो या तो सूझबूझ कुछ नहीं है, यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं, और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे, मगर किसी भी लोग को हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बार आगरा गए तो गार्ड ने हमसे पूछा कि आप कहाँ के हो, आप हमें अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो आप लोग तो आपने ये कभी महसूस नहीं किया होगा। ये जो भावना है, ये बस हम जो उत्तर पूर्वांचल से आते हैं, ये बस हम ही समझ सकते हैं। इसमें कितना गम है, कितना दर्द है, और कितनी ताकत चाहिए कि इसके पश्चात भी भारत माता की जय, जय हिंद और देश का झंडा अलग अलग मंच पे हम गर्व से लहराते हैं। ये हमारी देशभक्ति और हमारी सहनशीलता और हमारे ताकत का प्रमाण है। मोदी जी ने जैसे सबको कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब एक हैं, लेकिन 1-2 घटना का वजह से पूरा माहौल खराब कर देता है। और ये मानसिकता, ये बीमारी कुछ लोगों के उसमें भरा हुआ है, और इससे देश को नुकसान होता है। सबको मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा देश है, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। धर्म के नाम में, जाति के नाम में, नस्ल के नाम में क्यों भेदभाव होना चाहिए? इसलिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें सब भारतीय को मिल करके ये बीमारी को हम लोग दूर करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ देश के और जगह से लोग आते हैं, उनका भी वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए। My colleague Ratnadeep joining us in order to get us details. Ratnadeep, the cops are denying the racist charge, claiming it was a clash between 2 groups instead. What is this twist, the latest twist, according to the police? Ratnadeep, take us to the details of what the police is saying at this point in time as far as the investigation is concerned, saying that it wasn't a racist attack that took place, but instead it was a clash between 2 groups, and that led to the death of Anjel Chakma.
This is for the police to investigate in terms of how this has happened. But the fact remains that the family of Anjel Chakma, his brother, his father, and his other relatives have come on record to say that when the incident happened, his younger brother did report that they were, racially abused, and after that this confrontation took place and this incident has happened. But the question remains is that there are serious allegations now on Uttarakhand Police, particularly from the family side, also from the Chakma Students Association. They have issued a statement saying that there was a delay in terms of the police action, in terms of even police taking the formal FIR, and therefore perhaps this is for the Uttarakhand government, given the fact that it's so much of protest and outrage on this issue, to actually now look into this matter more seriously. There are demands from certain groups in Northeast that there has to be a central agency investigating this racial attack and subsequent brutal attack on Anjel Chakma. However, if the police is investigating, Uttarakhand Police is investigating, they are saying that 5 suspects are under their custody. They are looking for 1 suspect. So one has to perhaps now look at what led to this incident. There would be CCTV footage which the police has. They must be analyzing them. But the question remains is that if it was a clash between 2 groups, then why did initially police not say this, and now why is police coming up with this version? So these are issues, there are questions which are emerging even as there are protests taking place on the streets of, particularly in Tripura, his home state. There have been so much of social media outrage. We have played out those sound bites from politicians across political spectrum who represent Northeast in center and states. So they have been criticizing this kind of act that has taken place, and also many of them sharing their own experience. So therefore this is not one-off case. What might have led to this situation is something for police to investigate. But the fact remains is that there have been previous cases like the Nido Taniab case of Arunachal Pradesh in a couple of years back, that students from Northeast have been racially abused, and that have led to even brutal attacks and death of students.